नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज मैं बात करूंगी एटमॉस्फेयर के कुछ फिनोमिनन और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अपना पहला जो मेरा वीडियो था एट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पार्ट 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर में 5 मेन लेयर्स होती हैं और अलग अलग लेयर में टेम्परेचर का बर्ताव अलग अलग होता है, लेकिन एयर प्रेशर लगातार घटता ही जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर मेसोस्फेयर होती है और सबसे गर्म लेयर थर्मोस्फेयर होती है, लेकिन थर्मोस्फेयर में जो ट्रांसफरेबल हीट एनर्जी है वो कम होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स है वो भी बहुत कम होते हैं। एक बात जो मैं अपने पिछले वीडियो में कवर नहीं कर पाई थी वो है पॉजेस। तो एक लेयर जब खत्म होती है और दूसरी लेयर शुरू होती है, उसके बीच में एक बाउंड्री होती है। ये बाउंड्री जो है वो बहुत वेल डिफाइंड कोई लाइन नहीं है क्योंकि एटमॉस्फेयर गैसियस लेयर है। तो एक गैसियस लेयर खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई तो गैसेस के बीच में सॉलिड की तरह कोई वेल डिफाइंड लाइन नहीं है, बट देयर इज सर्टेनली अ बाउंड्री। सो द फर्स्ट बाउंड्री इज tropopause. So what is tropopause? Tropopause is the boundary between troposphere and stratosphere. It's the area where the properties of troposphere begin to fade out and the properties of stratosphere begin to show up in the atmosphere. Tropo refers to troposphere and pause means to stop. So tropopause is where troposphere ceases to exist and stratosphere begins. Similarly, there is stratopause, where stratosphere ceases to exist and mesosphere begins to show up. So stratopause. Third is mesopause, where mesosphere ceases to exist and thermosphere starts to begin. So mesopause is the boundary between mesosphere and thermosphere, and stratopause is the boundary between stratosphere and mesosphere. Similarly, there is a thermopause, which is the boundary between thermosphere and exosphere. But thermopause itself is not very well defined, and pause itself is not very well defined. Another thing that I forgot to mention in my past video is the radiosonde instrument. So a radiosonde instrument is a telemetry device that is let out in the atmosphere via a hydrogen or a helium balloon to measure atmospheric parameters like wind velocity, air temperature, air pressure and humidity. जो रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है वो एक बैटरी ऑपरेटेड टेलीमेट्री इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है एक हाइड्रोजन या हीलियम के बलून के द्वारा, और वो एयर प्रेशर, विंड वेलोसिटी मतलब विंड स्पीड प्लस डायरेक्शन, ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर, इन सब पैरामीटर्स को मेजर करता है। जो रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है वो हर शहर के मौसम विभाग हर शहर के मौसम विभाग के केंद्र द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हर रोज वायुमंडल में सैकड़ों रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स छोड़े जाते हैं। पटना जैसे छोटे शहर में भी एक मौसम विभाग केंद्र है और मौसम विभाग के केंद्र की जो छत है उससे हर रोज एक नियत समय पर एक रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट छोड़ा जाता है। वो बेसिकली एक बड़ा सा गुब्बारा होता है और उसमें एक मेटल का बक्सा लगा होता है नीचे, जिसमें सेंसर्स होते हैं और रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं। जो सेंसर्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स जो होते हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड वेलोसिटी, इन सब को मेजर करते हैं। और जो रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो इस सिग्नल को वाया रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करते हैं ऑन टू अ डिवाइस विच इज केप्ट इन द बिल्डिंग ऑफ द वेदर डिपार्टमेंट। जो वेदर डिपार्टमेंट की बिल्डिंग होती है उसकी छत से रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट छोड़ा जाता है और वो रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट सेंसर से सारा डेटा सेंस करता है और रेडियो ट्रांसमीटर से उस डेटा को एक कंप्यूटर पे भेजता है जो कि वेदर डिपार्टमेंट के बिल्डिंग के अंदर ही होता है, और वो सारा डेटा वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और जो मौसम की जानकारी हर शहर की आपको मिलती है, आज का तापमान क्या रहा, आज का विंड वेलोसिटी क्या रहा, और ह्यूमिडिटी क्या रहा है, एयर प्रेशर क्या रहा है, ये सारा जो डेटा आपको मिलता है हर शहर का, वो रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही मिलता है। सैटेलाइट्स आज भी हैं, सैटेलाइट्स बाद में आई और वो बहुत इस्तेमाल होती हैं, लेकिन रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो माइक्रो क्लाइमेट को असेस करने के लिए काफी काम में आता है। मतलब एक पर्टिकुलर शहर में जो क्लाइमेट होगा उसको असेस करने के लिए काफी काम में लाया जाता है।
कभी कभी रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट्स को जमीन से बलून के द्वारा ऊपर नहीं भेजा जाता, बल्कि हवाई जहाज के द्वारा ऊपर से नीचे गिराया जाता है, तो ड्रॉप किया जाता है, इसलिए उनको ड्रॉप साउंड्स भी कहते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स, द रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट्स which are not let out into the atmosphere via a hydrogen balloon but rather dropped from an aircraft are called drop sounds. Similarly, radio sound instruments that are used to measure the atmospheric ozone concentration are called ozone sounds. तो रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट ही अगर उसको नीचे गिरा दिया गया तो वो ड्रॉप साउंड कहा गया, अगर उसको ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज हुआ तो ओजोन साउंड हो गया। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ ताकि ये क्लियर हो सके कि रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसा है। ये देखिए, ये रेडियो साउंड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक हाइड्रोजन बलून लगा और उससे ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये कनेक्टेड है, और इसी में सेंसर्स और रेडियो ट्रांसमीटर्स भी लगे होते हैं जो डेटा को सेंस करता है और इंफॉर्मेशन डिवाइस पर भेजता है, वो कंप्यूटर पर भेजता है, जो कि वेदर डिपार्टमेंट के अंदर फिट होता है कंप्यूटर, और फिर हमें मौसम की सारी जानकारी उस शहर के बारे में मिल जाती है। एक और फिनोमिनन जो मैंने आपको कहा था कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, वो है ऑरोरास। ऑरोरास क्या होते हैं? ऑरोरास are an electric phenomenon resulting in a brilliant show of light over the North Pole around the Arctic Circle and over the South Pole around the Antarctic Circle. This happens when a solar storm releases millions of charged energized particles into the space. These energized particles, they hit the Earth's magnetosphere, Earth's magnetic field, and then concentrate towards the poles. In the poles, they concentrate in the thermosphere. And in the thermosphere, there are charged atoms, molecules, and ions. We all know that. When these charged particles released out of the solar storm, they collide with nitrogen and oxygen atoms in the thermosphere. They release tremendous amount of light energy, which looks like beautiful fireworks in the sky, and these are called auroras. When auroras occur on the North Pole or around the Arctic Circle, they are called aurora borealis. When auroras occur in the southern hemisphere over the South Pole or around the Antarctic Circle, they are called aurora australis. When the charged particles from the sun collide with oxygen atoms or ions, they emit green and red light. Whereas when the same charged particles from the sun collide with nitrogen, they emit blue or purple light. And let me describe everything one more time through another video so that you are very clear about what auroras are and how they happen. An aurora looks like a beautiful display of lights in the sky. These are some auroras that were spotted in the sky over central Alaska. You can also see auroras from space. This is what an aurora looks like from the International Space Station. The name of an aurora changes depending on its location. If you're in the northern hemisphere, it is called aurora borealis, or northern lights. And if you're in the southern hemisphere, then it is called aurora australis, or southern lights. So, what causes the beautiful displays of lights anyway? The sun. That's right. Even though auroras are best seen at night, these colorful displays are caused by our ever-changing sun. How exactly does it work? Well, the sun is constantly sending heat and light to Earth. It also sends other kinds of energy in small electrified particles, too. This is called the solar wind. Earth has a magnetic field, which protects us from most solar winds, but it also traps some of the electrified particles in the space around Earth.
The sun does not always send the same amount of energy. Sometimes the sun has huge outbursts and blasts more stuff into space than the usual solar wind. These events are called solar storms. During one kind of solar storm, called a coronal mass ejection, the sun bursts a massive bubble of gas that pops and sends particles and energy zooming through space. When a solar storm reaches Earth, it dances with our magnetic field, and some of the energy particles that zip around the magnetic field dive into our atmosphere near the North and South poles. Particles then bump into gases in our atmosphere. These interactions result in displays of light in the sky, auroras. When particles bump into oxygen in our atmosphere, the reaction makes green and red light. When particles bump into nitrogen in our atmosphere, it makes blue and purple light. Earth is not the only planet with auroras. If a planet has an atmosphere and a magnetic field, it probably has auroras. For example, NASA spacecraft have captured amazing auroras on Jupiter and Saturn. Learn more about our planet and our solar system at NASA Spaceplace. Thinking about आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑरोरास क्या हैं, कैसे होते हैं। आई होप रेडियोसॉन्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी जो जानकारी मैंने आपको दी वो भी यूजफुल होगी, और पॉजेस के बारे में जो मैंने आपको बताया, जितना मुझे पता था मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको बताने की। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।